सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं सभागार में उपस्थित एयरफोर्स स्कूल नई दिल्ली और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से आए विद्यार्थियों और देश के अलग अलग राज्यों से आए हमारे नए भारत के सशक्त प्रहरियों का। इतिहास साक्षी है कि किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है। संसद भवन का ये केंद्रीय कक्ष ऐसे ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं की यादों को संजोए हुए है, जिनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसी कड़ी में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की पहल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में युवा भागीदारी की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद युवाओं को महान विभूतियों के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद करना है। आज 19 नवंबर को हम याद कर रहे हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री को, जिन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इंदु नाम दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से जिसे प्रियदर्शनी नाम मिला, तो दादा ने अपनी माँ की याद में जिसे इंदिरा नाम दिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवन यात्रा पर देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके आधार पर 75 युवा प्रतिभागियों का चयन किया गया। इनमें से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में बोलने का अवसर अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आए 30 चयनित प्रतिभागियों को मिला है। आयोजन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग की अहम भूमिका रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की नवीन संकल्पनाओं को मूर्त रूप देता यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज प्राइड द्वारा शिक्षा मंत्रालय और युवा मामलों के विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। ये चौथा मौका है जब युवाओं को महान राष्ट्रीय नेताओं की जयंती पर उनके बारे में अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले इसी वर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, इसके बाद 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर और फिर 14 नवंबर बाल दिवस पर आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश भर से आए युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इस ऐतिहासिक कक्ष में कर चुके हैं। सभागार में उपस्थित प्रतिभागी वक्ताओं के विचार जानने से पहले अब हम आपको नियमों की जानकारी दे देते हैं। मंच पर प्रत्येक प्रतिभागी को 3 मिनट का समय मिलेगा और 2 मिनट 45 सेकंड पूरे होने पर घंटी बजाई जाएगी। तो हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। आज नया इतिहास गढ़ रहा न्यू इंडिया का युवा सजग है, बुद्धिमान भी और आत्मविश्वास से भरा हुआ भी। तो सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं ऐसे राज्य के प्रतिभागी को जिस राज्य ने प्राचीन संस्कृति रीति रिवाजों को संजो कर रखा है, ऐसी भूमि जिसे प्रकृति ने खूब प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। तो मंच पर अपने विचारों से परिचित कराने आ रही हैं उत्तराखंड के आर्मी पब्लिक स्कूल की मौमिता मैती। Greetings to everyone present here today. I am Momita Mehti, a student of Army Public School, Birpur, Dehradun. I am not a person to be pressured by anybody or any nation. Such was the personality of Mrs. Indira Gandhi, the third Prime Minister and the first and only woman Prime Minister of India till date. She was born as Indira Nehru on 19 November 1917 in Allahabad. Her father, Pandit Jawaharlal Nehru, was a prominent figure in the Indian independence movement against British rule. Since childhood, with both her parents setting fierce examples for her, she undoubtedly grew up to be a strong and individualistic woman. She was only 5 years old when she displayed her first act of rebellion by throwing her British-manufactured doll into the fire in support of boycotting British goods. In 1966, she became the Prime Minister of India after the then Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri's sudden demise.
Then began her most memorable journey. Marked by success, one of her most important reforms was the Green Revolution in the 1960s. High-yielding variety seeds and modern technologies completely transformed India into a rich, self-sufficient agricultural nation. How was she viewed in the public? Well, her public image was of a fiercely brave prime minister. Even her opponents respected and regarded her as a woman of iron strong will. In 1974, despite the many opposing factors, she ordered the development and testing of indigenous Indian nuclear weapons. On the glorious day of 18 May 1974, India detonated its first indigenous nuclear bomb in Pokhran, Rajasthan. Indira Gandhi's strength, determination, and willpower is surely something we youngsters could learn from her. Perhaps her most important role was during the 1971's Bangladesh Liberation War. Despite the combined forces of Pakistan, China, and the US, she ordered the Indian Armed Forces to declare war on Pakistan. We emerged triumphant and thus forged the new independent state of Bangladesh. Indira Gandhi's legacy continues to live on in today's politics, and her life continues to be a lesson for many others. Indira Gandhi was one bold woman who governed a vast nation independent of any external influences. She was the Iron Lady of India, the one and only Srimati Indira Priyadarshini Gandhi. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. थैंक यू मौमिता। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं दिल्ली के ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रही शाल्वी सिंह को। सभा में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को नमस्कार। मैं शाल्वी सिंह कक्षा 10वीं की ममता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी नई दिल्ली की छात्रा आज देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मोत्सव के अवसर पर सभाजनों के समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। इंदिरा गांधी न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गईं। यही वजह है कि उन्हें भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण से नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। लगभग 16 वर्ष तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल एवं 1984 में सिख दंगा जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को तीखी आलोचनाएं और विरोध प्रदर्शन झेलनी पड़ी। इसके बावजूद रूसी क्रांति के साल में पैदा हुई इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में विश्व शक्ति के सामने ना झुकने की नीतिगत और समयानुकूल निर्णय क्षमता से पाकिस्तान को परास्त किया और बांग्लादेश को मुक्ति दिलाकर अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य किया। 31 अक्टूबर 1984 ने देश ने एक ऐसी महान हस्ती को खो दिया जिसने अपना जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, अगर मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं तो मुझे गर्व होगा। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे देश की उन्नति और ताकत में योगदान देगी। निसंदेह देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की जीवनी हर महिला के लिए एक जीवंत उदाहरण है। दृढ़ संकल्प की शक्ति पर कोई भी स्वर्णिम सफलताओं को दर्ज करके राष्ट्र की सेवा कर सकता है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शाल्वी। देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अगले प्रतिभागी वेदांत शर्मा को। My heartiest greetings to one and all present here.
I'm delighted to address you all on this occasion on the birth anniversary of Srimati Indira Gandhi. There are moments in history when brooding tragedy and its dark shadows can be lightened by remembering the great moments of the past. Indira Gandhi was the third Prime Minister, second longest serving, and the first woman Prime Minister of the Republic of India. Hailing from a family with a long-standing association with the Indian freedom struggle, Indira Gandhi ably carved out a niche out of herself, and in the annals of history, Srimati Gandhi assumed the political leadership of the Republic of India when it was still in a nascent stage, and replete with all manner of challenges that prevailed in the former colonies: poverty, fledgling industrial infrastructure, health, food security, established social hierarchies, and above all, a potentially fragile political unity. Srimati Gandhi kept the country united and also expanded the boundaries, namely the integration of Sikkim in India in 1975. As expected of a noticeable statesman, Indira Gandhi's legacies involved both ideological and institutional interventions. The nationalizations of banks in 1969 opened the possibility to extend the credit to a crucial sector like agriculture. Mrs. Gandhi's understanding of her role as a political leader is further revealed through ideas that she put forward in the public domain. For the instance, the idea formally introduced under Article 39A, provision for equal justice and free legal aid, or Article 43A, urging the state to make provisions for participation of worker in the management of their organization. However, the most notable exercise by Srimati Gandhi in the realm of ideas remains the formal introduction, the idea of secularism, into the Constitution of India, which to this day acts as a moral compass for millions of people and as a key value that all open and fair democracies promise to hold by. In fair estimation, Srimati Gandhi's life was one of personal hardships, professional challenges, and political challenges and adventures. It was through all this that she was still able to competently lead this country through its numerous challenges. Indira Gandhi's life journey is a testimony to the fact with a strong resolve and empathy for others, a true fulfillment of life possibility. I hope we are able to acknowledge, value, and employ such a temperament in our own journeys. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू वेदांत। भारत देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों का गर्व है। मंच पर अगली प्रतिभागी आ रही हैं पीवीएन रितिका, जो आंध्र प्रदेश से हैं और अंग्रेजी भाषा में अपने विचार रखेंगी। A very good morning to everyone. My name is Ritika Ponnuru and I am from Andhra Pradesh. As we all knew that it is the birth anniversary of our first woman Prime Minister, Srimati Indira Gandhi Garu. Firstly, I have a close relationship personally from the Andhra Pradesh. I just want to tell you a story regarding how she is very close to the Andhra state. When she came to Andhra, she started giving speech in Andhra Pradesh. Many people are giggling themselves, they were not listening to Indira Gandhi. So she was so shocked and she was very angry at that time. So she realized that she's just speaking in Hindi such that these people are not understanding Hindi. All people will not come to know Hindi as we are South Indian people. So she announced in English that is there any one of the translator who can translate from Hindi to Telugu. In that location, one of the 19 years old boy raised a hand and came to the stage that I can translate to Hindi to Telugu. And whatever the Indira Gandhi is delivering the speech, the same thing has translated by that 19 years old boy. And he is none other than the former Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Rajshekar Reddy Garu. She found that he has a great analyzing thing and he is a great translating power as well. So she made him as the young leader of the for the Congress. Nextly, we all knew that she wants to encourage the middle class people to fulfill their dreams as well. In that case, she had initialized the loans for the banks as well. And we all knew that the West Pakistan and the war between West Pakistan and East Pakistan, how deliberately she made it and she cracked it as well. Nextly, we all knew that she hate
foreign products. But nowadays, all ourselves and even our people have a great craze towards the foreign products. They never think about self-reliance of India. So on that days only, she made a decision that she never want to use foreign products. And the great decision made by her, still it is running by even our government to make self-reliant India, which should be indigenous of the products as well. It might be applications or it might be any other products. And exports and imports are the greatest impact that had happened in the India as well. She took the decision that she need to export our products to other foreign countries, but we never need to use those foreign products. These are the great decisions she made by. Nextly, when we come to the equality, she wanted even men and women should be equally organized. I just want to personally tell, I have seen this ma'am in this hall itself, how the woman is organizing in a great manner. Even she proved that women can do many things, can achieve equally to the men. She's one of the prominent women among the world I have seen. So I can tell that each and every woman need to be inspired from like Indira Gandhi as well. So thank you for giving this opportunity, and I just want to conclude this narration about how she told about a sloka in Maharashtra, I think so. She delivered this sloka. Yatna naryestu pujente tamantre tatra devata. Where women are being worshipped, there the goddess will be one. So thank you for giving this opportunity. थैंक यू रितिका। भारत का सबसे साक्षर राज्य और नारियल पेड़ की भूमि है केरल। इस राज्य का प्रतिनिधित्व करने हम आमंत्रित कर रहे हैं सोनू सी जोस को, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन से हैं। Good morning, everybody. വന്ദനം ഭവാനുയരുന്നു ഭുജശാഖ വിട്ടു ഞാൻ ഭയമറ്റു പറന്നു പോയിടാം സ്വയം ഇദ്യോവിൽ ഒരാശ്രയം വിന. These are the words spoken by Sita to Ram in the poem Thoughtful Sita by Kumar Nashan, which means that I will fly high without any fear in my heart and without the help of anyone. These lines seem very appropriate for the Iron Lady of India, Srimati Indira Gandhi. Respected dignitaries and everyone, I am Sonu C. Jose, representing NYK Pathanamthitta District, Kerala. Today, I would like to give you a glimpse on the life, philosophies and contributions of Srimati Indira Gandhi, one of the most popular leaders in the world history. Apart from being the daughter of Pandit Jawaharlal Nehru, she marks her own identity as the first woman Prime Minister of India. Her strong presence in the international scenario helped to establish India's position as an emerging superpower. Through the implementation of fearless administrative decision, she transformed her image from Gungi Gudiya to Goddess Durga. It is under her regime, India's foreign policy witnessed a tremendous change. The biggest success of her foreign policy came with the creation of Bangladesh after the Indo-Pakistan War of 1971. Bangladesh is celebrating their liberation is only because of the extreme support given by Indira Gandhi in signing the Shimla Agreement. She was a people's person in terms of policy decision that she took during her tenure. Nationalization of 14 private sector banks was, by means of ordinance, was established so as to make the credit easily available to the priority group. Her another achievement was she facilitated green revolution as a solution while America stopped their export of food grains to India, which ultimately led to food scarcity. Indira didn't allow her citizens to be starved. At that time, she took green revolution as a solution for that moment. Another thing that she was a powerful leader with a great vision about science and technology. The Vikram Sarabhai Space Center was her dream. And the first man in space adds a new feather in her cap. So absolutely, we can call Indira Gandhi as the Iron Lady of India, because she flew over all the obstacles and difficulties and proved that every woman in the world can change the world. And one more thing, I want to give you a message from the life of Indira Gandhi, that fly high
without any fear in your heart and show the light to world with your inner fire. Thank you and have a nice day. Jai Hind. थैंक यू सोनू सी जोस। भारत के पूर्वी तटीय राज्य ओडिशा से अगली प्रतिभागी ग्रेसी निशा को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन संसद के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में करें। An ancient Sanskrit saying says that women is the home and home is the basis of society. Juhar. This is Gracie Nisha Singhal, a student of Vikas Residential School, Bargarh, Odisha, present over here to share a speech over the legendary lady who stood as a backbone of our modern India. Indira Priyadarshini Gandhi was born on 19th November 1917 in Allahabad. She was very energetic from her childhood and loved by everyone. She participated in the non-cooperation movement and formed Vanar Sena when she was also an environmentalist. She came to power at a time when political instability prevailed in India. The boldness in her character helped India thrive through various tumultuous times. Being at the helm of national affairs, Srimati Gandhi never hesitated in calling tough calls, a virtue crucial for the success of a national leader. Her contribution in developing India in all aspects is appreciated. She emphasized over the science sector, the industrial sector, and especially the cultural heritage of our country. In her tenure, Green Revolution, Operation Smiling Buddha, Shimla Agreement, nationalization of private banks, and many other reforms took place. She wanted women to be treated equally and considered them the ultimate power. She believed that women's power is negligent, but it formed the base of our country. Once she said, "A nation's strength consists in what it can do on its own, not from what it can borrow from others." The day before her tragic death, she spoke up, "I shall continue to serve until my last breath and when I die. I can say that every drop of my blood will invigorate India and strengthen it." And surely it did. Her contribution, her dauntless determination, her impeccable bravery and legacy has strengthened Ma Bharati to an extent beyond words. Madam Prime Minister has been and will always be an internal source of inspiration for the whole humankind, especially the girls and the women across the nation and the world. Jai Ma Bharati. Thank you so much. उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य जो चारों ओर से पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा है, यहाँ से पावन सलीला ब्रह्मपुत्र बहती है। इस असम राज्य से प्रतिभागी के रूप में चुनकर आए हैं हिमांशु साइकिया। हिमांशु मंच पर आएं और पूर्व प्रधानमंत्री के स्मरण को साझा करें। Namaskar. Respected dignitaries and all the members of parliament from different parts of India present here. This is Himanshu Saikia from the northeastern part of India, representing Assam, located in the northeastern part of India, which is full of different cultures and tribes in diversity. Today, in this glorious moment of patriotism, I would like to express a short glimpse about the life and the contributions towards integration and national development of the first women Prime Minister of India, as well as one of the greatest women with effective personality. Indira Gandhi was the third Prime Minister of India, and also the first, and to date, only the female Prime Minister of India. And till date, she is also considered as one of the boldest and dynamic leader in the world. Gandhi fought all odds against her to fight terrorism and undemocratic values in the country. Indira Gandhi, popularly known as the Iron Lady of India, who sacrificed her own life for the sake of our country, who faced boldly the international political interference towards Indian politics. As the Prime Minister, Gandhi
was known for her political transigency and unprecedented centralization of power. Belonging to a Kashmiri Pandit family of Allahabad, Indira Gandhi was born on 19th November in 1917. Her birth anniversary is now celebrated as the National Integration Day as a symbol of unity across India. The first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, was her father, who was one of the chief figures in India's struggle to achieve independence from the British rules. Indira Gandhi witnessed how the colonial rule absorbed the treasures and resources of India. Gandhi showed the entire world what a woman is capable of ruling a country with a great diversity. The entire political scenario of India became more constructive and united during her political period. In her ministerial span, she tried to establish India the stepping stone to becoming a superpower in the world. She also nationalized all the existing banks back then so that the common people can enjoy more convenience. Being the first and only the woman to hold one of the most powerful positions in the country was the first and to break the glass ceiling in a country where women are discriminated in all the spheres of life. Indira Gandhi played a significant role in strengthening India's democratic structure. She viewed the life as an integrated process. Now coming to the conclusion part, Indira Gandhi is no longer amongst us. But in her departure, she left a message to the people of this incredible India and to the whole world. That is, a commitment to the people can never be killed by any power, however stronger it may be. Dhanyavad, Jai Hind. धन्यवाद हिमांशु। 2022 यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष, भारत के संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों से देश के युवाओं को अवगत कराने का सुनहरा अवसर। इसी कड़ी में हम मंच पर बुला रहे हैं लोयेश रानी सिंह को। वे मंच पर आएं और अपने विचार अभिव्यक्त करें। Mistress Indira Gandhi. It's not a name, it's a brand, a vehicle of veracity, a model of women empowerment, a powerhouse of millions of people, a lady who smashed and shattered all the narrow domestic walls. A very, very warm and hearty greetings to all of you. My heartfelt tribute to the bravest women of our country, Srimati Indira Gandhi ji. Today, this is Loyesh Rani Singh representing NYK Odisha. I would like to thank Honorable Speaker of Lok Sabha and Pride for giving me this opportunity to speak here in the Central Hall of Parliament. Well, today I would like to speak on the topic of life, philosophy, contributions and teachings of Srimati Indira Gandhi ji. Who could India envision to be its leader in 1966? A choice, in fact, the best choice made by people of India to have Srimati Indira Gandhi ji as our Prime Minister. To recreate the history, to redefine the future, to channelize the spirit, to encourage modernity and unity of free India, Mistress Gandhi did a vibrant role. Well, today our women represent only 10.5% of all the members of the parliament. Is it? If yes, I have a message for all the women of my country. Let's pulsate the fire of patriotism like Mistress Gandhi did. क्योंकि अब सिर्फ घर नहीं, देश भी संभालेंगे. Because your country empowers you, it is your duty, it is your responsibility to empower your country too. Let me make it very clear to the respected house, जो अपने देश के लिए काम करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. And she did. She did relentless efforts for the upliftment of the poor sections of our society, despite facing many challenges. Autonomy given to regional states, spectacular victory in the war of 1971, launching of the first satellite of free India, nationalization of banks, stepping stone of green revolution are major contributions during her legacy. So what should we young mind learn from such a brave woman of our country? Integrity, insight and inclusiveness are three most prominent leadership qualities that we must be learning from her. Integrity will show you your true self. Insight will take you to an unbiased horizon of the world.
Inclusiveness will teach you to take care of all sections of the society and all creatures of the God, and then our nation must glorify. In the end, I would like to say, तू चल समय के साथ साथ, न डरेगा तू न झुकेगा तू, देश को आगे बढ़ाना है, सर उठा के देख ले, ये वक्त फिर से आया है. With this, I conclude. जय हिंद. Thank you. धन्यवाद लोयश रानी. अब मैं मंच पर बुला रही हूँ अगली प्रतिभागी मान्या पंडोह को, जो भारत के गौरव जम्मू कश्मीर से है. मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे. Greetings to everyone present here. I am Manya Pandoh from Union Territory of Jammu and Kashmir, student of Maulana Azad Memorial College, Jammu. It feels so good to talk about Srimati Indira Gandhi, the Iron Lady of India. She proudly said, opportunities are not offered, they must be worked and rested for. And this calls for perseverance and courage. And that's what we got today, the opportunity to be here. कोई मुसीबत ना रोक पाए वो आंधी थी, कोई मुसीबत ना रोक पाए वो आंधी थी, देश के लिए प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी थी. She established her worth as one of the strongest prime ministers of the country and led India to greater heights. She was a woman of vision, courage, and foresight. She was the third prime minister of India and the first female prime minister of our country. Her journey was nothing short of her being considered as an icon by crores of people. Her journey surely had its own hurdles, but she overcame all of them pretty fearlessly. She also said that, let's not forget, in India, the symbol of strength is a woman, goddess Shakti. She broke the social stigma of gender inequality and thrived people with her work and advantaged lives of crores of people in India. Her small decision made a great impact in our country. She has an excellent background when it comes to academics and politics. Being the first female Prime Minister of India, she gave massive respect at the world's fair, and especially at the women empowerment organizations across the world. Under her regime, the entire political scenario of India became much stronger and united. She showed the whole world what a woman is capable of. Even during her ministerial span, Pakistan was defeated in the war of 1971. She was the epitome of women's power that the whole world realized during her regime. She brought prosperity to the common and always had ears for what the common people of India had to say. During her speech, she once said, "Even if I died in the service of nation, I would be proud of it. Every drop of my blood will contribute to the growth of this nation and will make it strong and dynamic." Thank you, everyone. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद मान्या. समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है झारखंड. तो अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नीरज कुमार को, जो हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त करेंगे. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारी शक्ति का परचम पूरे दुनिया में लहराया था. श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारी शक्ति का परचम पूरे दुनिया में लहराया था. गरीब और किसानों के लिए ढेर सारा कानून बनाया था. मैं नीरज कुमार यादव, जामताड़ा महाविद्यालय जामताड़ा, हिंदी प्रतिष्ठा और एनएसएस का सक्रिय सदस्य हूँ. आज इस सभा में उपस्थित सम्मानित गण और सम्मानित साथियों, सभी का मैं सादर अभिवादन और जय जोहार करता हूँ. आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी के राष्ट्र निर्माण एवं विकास में जीवन का निम्न योगदान रहा, इस विषय पर अपनी विचार को रखने जा रहा हूँ. सर्वप्रथम इंदिरा गांधी जी को लौह स्त्री के नाम से जाना जाता है, अर्थात उनको दूरदमनी और तेजस्विनी भी कहते हैं. 1966 ईस्वी के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारत में हरित क्रांति को जोर शोर से बढ़ावा दिया.
इसके पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने छोटे छोटे बैंकों को और बड़े बैंकों को मिलाकर के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि वो बैंक छोटे किसानों को कर्ज नहीं देते थे, वो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और उद्यमियों को कर्ज देते थे। इन कारण उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हमारे देश में तेल दूसरे देशों से आता था, उन्होंने किसी कारणवश बंद कर दिया, तो हमारे देश के श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने देश के छोटे बड़े सभी कंपनियों को मिलाकर के और तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके पश्चात उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी सीमा और भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा का निर्माण करवाया। सियाचिन पर भारत के सैनिकों ने उन्हीं के शासनकाल में कब्जा किया। उस ऑपरेशन को मेघदूत अभियान कहा गया। सिक्किम पर भारत ने उन्हीं के कार्यकाल में कब्जा किया। इसके पश्चात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक लोकसभा में आख्यान के दौरान उन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी दूसरा कोई नहीं, भागवती दुर्गा की अवतार हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश के आज़ादी के पश्चात लंबे समय से जो राजाओं महाराजाओं को पेंशन मिल रहा था, उन पेंशनों को बंद करके और किसानों को और गरीबों को उसी पैसा से सहायता पहुंचाने का काम किया। भूमिहीन को मकान और खेत देने का काम किया। हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने काम किया। इस प्रकार हमारे देश क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरने का मौका मिला। हम अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद नीरज कुमार। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है। हम सभी जानते हैं कि नारी का अस्तित्व ही इस सुंदर जीवन का आधार है। तो अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रतिभागी कामना मोतियान को। संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की, संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की, आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, जिस समय देश सारे विषयों में व्याप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे, उस समय भी हम थे जो प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में उपस्थित सभी गणमान्यों को, सभी प्रतिभागी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कामना मोतियान, एनएसएस इकाई राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीमा रोडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश की छात्रा इंदिरा गांधी जी के जीवन और राष्ट्र विकास में उनके योगदान पर अपने कुछ विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। कि संकट आया देश पर जब भी निज कौशल से दिया सहारा, संकट आया देश पर जब भी निज कौशल से दिया सहारा, मातृभूमि पर आंच न आए हर मुश्किल से उसे उभारा। जी हाँ, इंदिरा गांधी या मैं कहूँ इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, एक ऐसी महिला जिसने राष्ट्र विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक ऐसी महिला जिसने भारत को सदैव ही हर धर्म से ऊंचा माना। एक ऐसी महिला जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और आज तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही और बतौर प्रधानमंत्री वे एक मजबूत, एक सशक्त नेत्री साबित हुई। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए। जहां एक ओर भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की कतार में खड़ा किया, वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में भी अपनी प्रबल, अपनी सशक्त मौजूदगी का प्रमाण दिया। इंदिरा गांधी ने जहां एक ओर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वहीं दूसरी ओर राजभत्ते को समाप्त किया। और जहां एक ओर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी ओर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि सुधार योजना का भी आयोजन किया। किंतु आज भी इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है तो 1971 के उस युद्ध के लिए, जिस समय उन्होंने पूरी दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इंदिरा गांधी का केवल एक स्वप्न था, अखंड भारत का, कुशल भारत का। वो कहती थी कि मेरे खून का हर एक कतरा देश को मजबूती देगा। उन्होंने अपनी आखिरी श्वास तक देश की सेवा की और आज भारत का जो रूप है उसमें उनका कितना हाथ, उनका कितना श्रम,
उनकी कितनी साधना है ये हम सब जानते हैं। वो कहती थी कि हम सब अपने कर्तव्य भूल जाते हैं किंतु अपने अधिकार याद रखते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही निवेदन करूंगी कि जब भी हम ये प्रश्न करें कि देश ने हमें क्या दिया है, हम ये भी प्रश्न करें हमने देश को क्या दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद कामना। अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मेहुल दास रहमान को, जो दिल्ली से हैं। Forgiveness is the virtue of the brave. Namaskar to one and all. I am Mehul Das Rahman, studying in class 11th of ITL Public School. Today, I would like to present my thoughts and opinions on Srimati Indira Gandhi, the Iron Lady of India. Srimati Indira Priyadarshini Gandhi was the daughter of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. She got her education from various places, such as her primary education from Allahabad and her higher studies from Oxford and Shantiniketan. After that, she was elected in 1956. She was elected as the president of the Indian National Congress. Upon the demise of her father in 1964, she was later appointed as the member of the Rajya Sabha. The Rajya Sabha, and later joined the Lal Bahadur Shastri cabinet as the Minister of Information and Broadcasting. She was later bestowed upon with the opportunity to become the third Prime Minister of India in 24 January 1966. Her tenure as Prime Minister was full of ups and downs, but Indira Gandhi was known for her political intransigency and unprecedented centralization of power. During her tenure, war against Pakistan in support of the independence movement and war of independence in East Pakistan were fought, and both resulted in an Indian victory and the liberation of Bangladesh. This also extended India's influence as the sole regional power of South Asia. During her regime, India was one of the fastest growing economies in the entire world. Being the first woman to hold the most powerful position in the country, Indira Gandhi was the one to break the glass ceiling of the country, where women were oppressed from every sphere of their lives. Her rapid ascent to power gave confidence to thousands of women all across the world to break the stereotype and achieve success in their lives. As she once said, "Let us not forget, in India, the symbol of power is a woman." Srimati Indira Gandhi was the second longest serving Prime Minister after her father, and thus continuing on to his legacy. Srimati Indira Gandhi was a brave, strong, and visionary woman, and she showed the entire world what a woman is truly capable of. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू मेहुल दास रहमान। 1971 के युद्ध में जब भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मां दुर्गा का अवतार कहा था। इस सभागार में अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं रितेश कुमार को, जो बिहार से हैं। मैं लिखते लिखते रोया था, मैं भारी मन से कहता हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी, मैं उनको फूल चढ़ाता हूँ। A very good morning, honorable dignitaries, esteemed organizers, fellow speakers, and everyone present here. I am Ritesh Kumar from Nehru Yuva Kendra Purnia, and today I am going to pay my homage on the occasion of 105th birth anniversary of one and only female Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi ji. Whenever we will talk on women empowerment, Srimati Indira Gandhi ji will always be on top of the list. Making Vanar Sena to give her part of contribution in non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi reflects her devotion towards the country since childhood days.
In the year 1966, at the time of political instability, she took over the charge as Prime Minister while she was highly criticized. Even the leaders of her own party called Gungi Guriya to her, but she never gave up her courage and continued with her intelligence, skills, and hearted determination that a woman can also be perfect in all-round dignity of the world. During her term as Prime Minister, Indira Gandhi brought radical change in the country. She brought social reforms like introducing Equal Remuneration Act related to equal pay for equal work to both men and women. Her good relation with Soviet Union, United States, and Bangladesh reflects her strong international skills. Her economic decisions like nationalization of banks or strong decisions like abolishing privy purse from royal families shows her strong willpower. This made her evolve from the perception of a puppet to a strong leader with high moral skill, and thus people started calling her the Iron Lady of India. After Bangladesh Liberation War, D.K. Badwa has coined the phrase for her that India is Indira and Indira is India. She was even hailed as Goddess Durga by the opposition leader Sri Atal Bihari Vajpayee ji at that time. She was also named Women of the Millennium in an online poll organized by the BBC. Friends, I believe that India could not have been such an empowered country without her. One thing that we can surely learn from the life of Indira Gandhi is that you can be born in a privileged family, but to remain at top, you need to do continuous hard work with a strong determination and perseverance. It was Indira Gandhi who believed that every journey of life is an inspiration and we should celebrate it. Every new experience brings its own maturity and a greater clarity of vision. At last, I would like to leave you by quoting the last speech of Indira Gandhi, which she said just before the day of her demise, that even if I died in the service of the nation, I'll be proud of it. Every drop of my blood will contribute to serve the nation and make it strong and dynamic. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू रितेश कुमार। सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है भारत, अब दुनिया को ये बताना है। अपनी ओजस्वी वाणी के साथ अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के दीपांकर दत्ता को। दीपांकर आएं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अपने शब्दों से श्रद्धांजलि दें। Respected dignitaries and all my fellow members, good morning to all. I hail from small border district Poonch of Jammu and Kashmir. I am an NSS volunteer and student of SKC GDC Poonch, affiliated to University of Jammu. Today, I am feeling very happy and excited to be standing on this platform to speak on the topic, the life of the Iron Lady of India and her contributions to the national development. The sole children of Jawaharlal Nehru and Kamala Nehru, Shrimati Indira Priyadarshini Gandhi was born in Allahabad, in a family where almost all her relatives were involved in national politics. So, it was very hard for young Indira to remain a passive observer. As such, at the age of only 12, she formed Vanar Sena to lead resistance against the British rule. This was the beginning of the development of her political career. She remained the chief of staff of Nehru's administration from 1947 to 1964. Subsequently, her political career started expanding as she was elected as the member of Rajya Sabha in 1964. Further, in 1966, after the death of Shri Lal Bahadur Shastri Ji, she was appointed as the Prime Minister of the country by the Congress party leaders. As a Prime Minister, she implicated radical changes in the political, social, national and international policies of the country. The Indo-Pak War of 1971, which is preceded by Bangladesh's independence, is the saga of Gandhi's leadership. She was a very far-sighted woman. Her policy of nationalization of 14 major commercial banks proved to be extremely fruitful in the economic development of the country. Green Revolution in India under her leadership made remarkable advances in the agricultural produce of the country. As a result, the degree of self-sufficiency increased. Operation Smiling Buddha was launched under her leadership for testing India's first nuclear bomb. Under her regime, India's foreign policy saw a place where it established itself as a regional power in South Asia.
She was the only and longest serving female Prime Minister of the country. She was fearless, selfless, bold and powerful woman of the country. She changed people's perspective of looking towards women. She always believed that no man or woman in this country is weak. Everyone is a revolutionist and has the power to bring about revolution in any field towards national development. I would like to end this speech by saying a short poem. कोई मुसीबत ना रोक पाए वो आंधी थी, कोई मुसीबत ना रोक पाए वो आंधी थी, हर नारी के लिए प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लोहे की गोलियों से आयरन लेडी ने पाकिस्तान की कमर बांधी थी, लोहे की गोलियों से आयरन लेडी ने पाकिस्तान की कमर बांधी थी। हम भारतवासियों के लिए हिम्मत और गौरव की प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जय हिंद, जय भारत। पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने हमारे बीच आ रही हैं रूपा टैग्यो। इस भारत से हूँ मैं बनी, अभिमान है मुझे। इस भारत से हूँ मैं बनी, अभिमान है मुझे। इस भारत की हूँ मैं बेटी, अभिमान है मुझे। इस भारत की हूँ मैं बेटी, अभिमान है मुझे। अब सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। शहीद होना खत्म होना नहीं है, या केवल एक शुरुआत है। Stated by Miss Indira Gandhi, our first female former 3rd Prime Minister of India. भारत की बेटी who took prominent step from eradicating poverty to lead liberation of war against Pakistan over East Pakistan, now Bangladesh. Here I am, Miss Rupa Tagyo, representing the land of rising sun, Arunachal Pradesh, NYK, East Kamen. I am very much thankful in respect of Nehru Yuva Kendra Sangathan for giving me a platform to deliver a speech on about life, philosophy, teachings and contribution of Miss Indira Gandhi, Bharat ki Beti, and the Iron Lady of India. Miss Gandhi was no doctrinal figure or captive to ideas or wisdom inherited from her father, Sri Jawaharlal Nehru. Since from her childhood days, she actively involved in freedom struggle for India independence. Strong-willed, determined Miss Gandhi challenged stereotype at the time when nation was not ready to witness a female leader. Undoubtedly, she marked a major impact in northeastern region by granting statehood to Meghalaya, Manipur, Tripura, and most importantly, renamed NEFA, Northeastern Frontier Agency, as Arunachal Pradesh in the year 1972. Between that same year, she even took a major step to improve India's defense system by testing India's first national atomic nuclear bomb. And later on, she was even conferred by the title of Bharat Ratna during her tenure. Known for her political vision, grit and commitment for better India, she is remembered as an icon of women power, strong governance, and lead India to a better nation. She is known for her integrated process where activities and facets are different aspects, not separated into compartments. Later on, she even took a millennium step to make India ahead. She even marked India's national foreign policy. And therefore, I am very much thankful for her contribution towards our society. This is Rupa Tagyo. Jai Bharat, Jai Hind. थैंक यू रूपा। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों के राज्य तमिलनाडु से अब हम आमंत्रित कर रहे हैं सिनेगा बीएन को।
தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். I'm Sneha BN, a law student from Erode, Tamil Nadu. Indira Priyadarshini, popularly known as Indira Gandhi, was one of the most powerful and charismatic women of her time, heading the second most populous country in this world. Nurtured and raised up with the high noble ideas of her father and the first Prime Minister of independent India, Pandit Jawaharlal Nehru. She stood up to it and shaped India as a sole regional power of South Asia. She is remembered even today for her remarkable contributions to India's economic growth and progress through her effective domestic and foreign policies. It's pertinent to the state that she played a major role in the industrialization, nationalization, and establishment of strong public sector in this country. She was an ardent advocate of peace, progress, and socialism. Her decisions were firm, independent, and never once she turned surrender and submissive to the threats or pressures from any world power. Her main legacy was standing firm in the face of American pressure to defeat Pakistan and turn East Pakistan into independent Bangladesh. A staunch proponent of gender equality, the principle of equal pay for equal work was enshrined in the Indian Constitution under the able administration of Mrs. Indira Gandhi. In 1967, she introduced the 21st Constitutional Amendment, which guaranteed the use of both Hindi and English as official languages. This move made it clear and apparent that the official linguistic policy of the government is bilingualism, which in fact had a widespread among non-Hindi speaking Indian states. In the matter of agrarian reforms, she was a forerunner behind the historic Green Revolution, which prevented food scarcity and overloaded the warehouses of the country with grains. As a left-leaning liberal, she focused more on pro-poor programs to eradicate poverty and to improve the quality of life among Indian citizens. She had an amazing ability to communicate with and mesmerize the poor and disadvantaged. In 1971, her slogan, "They say remove Indira, I say eradicate poverty," was a crowd puller. Mrs. Indira Gandhi, when addressing UN Conference on Environment, said that poverty is the greatest polluter. In other words, poverty is the worst form of pollution. At that moment, the 54-year-old Indian Prime Minister took Stockholm by storm. Her life was full of struggles and sufferings, but she never allowed them to overpower or drag her down. A lioness she was. She still stands high towering among others as a role model for the Indian women to emulate and follow. To be liberated, women must feel free to be herself, not in rivalry to men, but in the context of her own capacity and personality. Nandri, Vanakkam. संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज हम याद कर रहे हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को। अगली प्रतिभागी हैं राजधानी दिल्ली से पलक गोयल। इंदिरा गांधी जी केवल एक सामान्य प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक सोच है जो प्रत्येक भारतीय के मन में बहती है। Good morning, one and all present here. Today, I, Palak Goel of 11th grade from Jaspal Kaur Public School, New Delhi, would like to pay my tribute to the revered Srimati Indira Gandhi ji. India has been experiencing many prime ministers, but her golden era outshines all periods. After the demise of her honorable Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri ji, she was selected as the Prime Minister over other Congress leaders. In the beginning of her first term, she was criticized by both the media and opposition as Gungi Gudiya. But she was a steadfast, dynamic woman who remained silent and proved her mettle at the right moment. She was an austere woman, a woman of her word, a good politician who wasn't moved by the internal chaos and disagreement. At the international level, she got the recognition by liberating Bangladesh from the omnipotent shackles of Pakistan. In 1975, she inculcated Sikkim to India's mainland through an open referendum and started nurturing relations with Soviet Union and other parts of the world. Her quality of kindness even bewitched
the great scholar Sri Rabindranath Tagore, who called her as Indira Priyadarshini Gandhi. I think it was because of her only that today the South Asia is infamously known as the Indian subcontinent. In this way, the so-called Gungi Kudiya got the phrase India is Indira and Indira is India by the Congress Party President D.K. Baruachi. At the domestic level, when India was facing inflation, food shortage, oil shortage, she brought the Green Revolution and set up the foundation stone of a self-reliant India. In 1974, India successfully conducted a nuclear weapon test and attained its nuclear identity on the world map. I would like to conclude with one quote of hers. Even if I died in the service of the nation, I would be proud of it. Every drop of my blood will contribute to the growth of this nation and make it strong and dynamic. At the end, I would just say, I'm grateful to be born in a country like India, where leaders like Indira Gandhi ji were born. Thank you, and Jai Hind and Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद पलक। अपने सशक्त हौसलों से नारी ऊंची उड़ान भर रही है, नित नए सोपान गढ़ रही है। तो आइए अगली प्रतिभागी सैंजली नायक को सुनते हैं, जो मध्य प्रदेश के नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। Jai Hind. A very sweet afternoon to one and all. I am Sandhya Nayak, hailing from the state of diamond, soya-bean, tigers, and pulses. The heart of incredible India, that is Madhya Pradesh, coming from Sanskar Dhani, Jabalpur. So, elated with pride and privilege to glorify an already existent figure in the pages of our golden history. A woman whose charisma facilitated Green Revolution. A woman who, in spite of burning in the waves of hatred, successfully harbored the idea of liberation of Bangladesh back in 1971. A goddess who was responsible in laying the foundational cornerstone of nationalization of 14 private banks. Yes, my dear friends, I introduce before you the most magnanimous Prime Minister that India could ever witness, Srimati Indira Gandhi ji, who had put smiles in our faces by successfully executing India's first nuclear bomb operation, Operation Buddha. She brought constellations into the earth by carrying out the most magnanimous Blue Star operation. Even in the domain of military, she had an impeccable and remarkable impression. When the entire world looked baby India with amaze, while we successfully launched our very first Indian satellite, Aryabhat, by initially carrying it in a bicycle to successfully hitting the stars of the Milky Way. Yes, my dear friends, it was Indira Gandhi ji who propagated and pitched the idea of Vasudhaiv Kutumbakam by facilitating the policy of foreign policy and re-strengthening, empowering India. When the entire agrarian economy of India was crippled with conventional farming methods like ploughing and monsoon, it was the idea of Indira ji to influx the injections of subsidy and green revolution to revive the handicapped agrarian economy. When the new India, independent India, was struggling to establish its territorial extent, it was Indira ji under whose able stewardship we managed to acquire Sikkim and Siachen. In fact, she was the queen of diplomacy because with 26th Constitutional Amendment 1971, we managed to give a closure to the princely era, an end to privy purse. This Qaumi Ekta Divas, Cultural Unity Day, is a great day for all of us because it is one of the apt, iconic, and significant representation of secularism. Towards the end, for this Iron Lady who managed to get her portrait hung in the central hall, I would like to quote that. "Tu khud ki khoj mein nikal, tu kis liye hatash hai? Tu chal,
तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और वाकई में दोस्तों, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। Yes, my dear friends, it was a great honorable Prime Minister, Srimati Indira Gandhi ji, who led a legacy by saying and quoting that the basic tinge or idea of success or progress of any nation is the power to question. Towards the end, I would like to extend my heartfelt gratitude to our honorable speaker and Pride team for giving me the golden opportunity to extend my views and viewpoints in this domain. Thank you so much. Jai Hind. थैंक यू संजलि। महर्षि वेदव्यास ने जिस पावन धरा पर महाभारत काव्य की रचना की, हम सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान है हरियाणा। तो यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का प्रतिनिधित्व करने हमारे बीच आ रही हैं शांभवी। Good morning to all the dignitaries and my dear friends present here. I am Shambhavi, an NSS volunteer from Sarla Memorial Government Girls College affiliated in CRSU, Haryana. It is a matter of pride and privilege that I have been selected to pay tribute to the Iron Lady of our country, Srimati Indira Gandhi, on behalf of my state Haryana, a land of culture and courage. Indira Gandhi, the lady who was once considered a dumb doll, but now she is recognized as the Iron Lady of our country. People of her time thought that she cannot make a single decision by her own, but later on she ruled the whole nation. Born on 19 November 1917, Indira Gandhi became the first women Prime Minister of our country in 1966. She was the most powerful Prime Minister of our country. She has contributed a lot for the welfare and development of our country. During the freedom fight era, she was the leader of Vanara Sena, a group of youngsters who were helping the freedom fighters. In 1971, when West Pakistan was torturing the people of East Pakistan, Indira Gandhi was the lady who, without any fear and hesitation, ordered the army to shatter Pakistan in two pieces and gave freedom to the Bangladesh. Indira Gandhi believed in equality. That's why she launched equal payment for equal work for both men and women, so that discrimination in working sector can be removed. She loved her nation so much, that's why she launched Poverty Alleviation Program, which is popularly known as Garibi Hatao Yojana, so that poverty or Garibi can be removed from her beloved nation. She nationalized the banks to finance the poor. Today, we are so proud that we are the nuclear power, but let me tell you that the first nuclear test was conducted in her regime. Indira Gandhi is the true inspiration for today's generation and especially for the girls. She is the true example of women empowerment. I think 3 minutes are not enough in which that brave lady can be described. But here, by keeping the time limit in my mind, I am going to end my words, but again convey my tribute to the brave lady, the Iron Lady of our country, Srimati Indira Gandhi, on behalf of my state, Haryana. Thank you very much for giving me your valuable time. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद शांभवी। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अगले प्रतिभागी को, जो राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हैं, दीप्ति जैन। Khamma Gani and good morning to one and all. Today, I, Deepti Jain from Udaipur, Rajasthan, feel honored to stand here on the birth anniversary of the Iron Lady of India, a lady whose birth was like an incarnation to show the world the power of women.
a lady whose bold voice and even bolder decisions glorified India's image across the globe, a lady who fought against all odds, Mrs. Indira Gandhi. When she took charge as the Prime Minister in 1966, India was at its most vulnerable moment economically and politically. This was the time when Srimati Indira Gandhi ji took these challenges with courage and conviction and went on to make a mark in the male-dominated politics of the country. Let us come to the historic year of 1971. Hiked oil prices, high inflation rates, low food stocks, and with Pakistan unleashing a reign of terror on its eastern frontier, India had to bear the burden of around 80 lakh refugees. On top of this, the US and China, who had joined hands with Pakistan, were trying to twist India's arms in every possible way. Even in such momentously challenging times, Indira Gandhi ji led the country like a tigress. It was her exemplary leadership skills that led to the formation of Bangladesh, and the whole world hailed for India. Indira Gandhi ji had an idea of India, an India which is humane, secular, peaceful, and democratic, an India where the Kisan is empowered, and an India which builds on sovereignty and opposes imperialism. How can the nation forget the landmark decisions of this Iron Lady that changed the course of history? From the abolition of privy purse and nationalization of banks to agricultural reforms that led to the Green Revolution. Bullets may have shredded her body, but no bullet will ever have the power to shred Mrs. Gandhi's contribution to this great nation and its people. At last, I want to stop my words by saying that महिला को अबला समझ तुम उसे कठपुतली बनाना चाहते थे। महिला को अबला समझ तुम उसे कठपुतली बनाना चाहते थे। महिला सशक्तिकरण की सजग उदाहरण इंदिरा गांधी जी को लोग दुर्गा कह सराहते थे। हर चुनौती पर अड़िग रही ना जाने कैसे लौ से वो निर्मित थी। भारत का शान बढ़ाने वाली इस बेटी पर स्वयं मां भारती भी गर्वित थी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीप्ति। नेहरू युवा केंद्र संगठन की प्रतिनिधि के रूप में अब हम मंच पर बुला रहे हैं कर्नाटक की एम स्फूर्ति को, जो अंग्रेजी भाषा में अपने विचार साझा करेंगी। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. She was born prosperous but dedicated to the penurious. She had a strong mind but looked at everything being kind. They said she was ruthless, reckless, and fearless. But she gave home to the homeless, land to the landless, and fortune to the fortuneless. One name, Indira Gandhi. Namaste everyone. This is Purti M from Karnataka, representing Nehru Yuva Kendra, Kolar. One woman who stood against all odds. One woman who showed what India is to the world. One woman who redefined leadership. One woman who actually changed the narrative of just a woman. And that one woman, Indira Gandhi. I feel immensely privileged to be speaking about life, philosophies, contributions, and teachings of Srimati Indira Gandhi. Our Sanskrit verse goes like this: Nari asya samajasya kushala vastukara asti, which translates to, woman is a sculptor of a beautiful and a healthy society. Likewise, Indira Gandhi reflected a restless spirit of mankind in building a society which is free of all human sufferings. Her policies were pragmatic and her dealings with foreign leaders were unsentimental. Her sensitivity in equality and her political willingness in handling adversities were exceptional. Indira Gandhi, known for her political intransigence and her far-sightedness, was an eminent statesperson, and hence she was very successful in achieving the idea of international peace, disarmament, anti-colonialism, and anti-racialism. A Sanskrit verse goes like, Nari Shakti Shaktishali Samajasya Nirmanam Karoti. Likewise, Indira's India re-emerged in the South Asian strategic stage. In fact, her India had the ability and willingness to grab the opportunities of power politics at a regional context.
In fact, not an exaggeration, but the idea of Vishwaguru Bharat that is being discussed today, the path was paved during her reign. During her reign, Indira Gandhi, for an iron lady that she was, took very bold decisions that actually contributed in building a very self-sufficient and self-reliant India, which was very strong from within, without giving up on the ideals of socialism. And also, it was her contribution that we could actually build a self-reliant, self-sufficient, and a strong India. Previously, it was said that women can only give birth to emperors, but cannot become one. And we have exception, Madam Indira Gandhi. So, my dear friends, this is to let you all know that hands which can shake the cradle can definitely shake the world. ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವ ಕೈ ಖಂಡಿತ ದೇಶವನ್ನು ಆಳತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू स्फूर्ति. अपनी कला और सांस्कृतिक विविधता के लिए मशहूर नागालैंड से आ रहे हैं एन फामिलेम वांगसू, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. समझ ये कहती है कि बेटियां कुछ नहीं कर पाती. समझ ये कहती है कि बेटियां कुछ नहीं कर पाती, लेकिन देखो बेटियों ने भारत को हमेशा संभाला है. नमस्कार. My name is N. Phamlem Wangsu, a national youth volunteer registered under the Nehru Yuva Kendra Sangathan from the land of festivals, my state, my pride, Nagaland. Today, I take this magnificent privilege with a deep sense of pride and my utmost humility to pay my tribute to honored Indira Gandhi, India's first and the only female prime minister. Needless to say, Indira was inarguably one of the most iconic national leaders who have played a major role in achieving various milestones for India. Indira was a woman with vision, courage, and foresight, always emphasizing on country's growth and development. No wonder she is addressed as the Iron Lady of India. Her beliefs and ideology from decades ago are still very prevalent and significant to this day. Indira herself had faced discrimination from people who did not believe that a woman can lead. Perhaps it was she who broke the social stigma of gender inequality and rather thrived in her leadership due to her passion in leading the country. Indira brought about a radical change in the country's economic, politics, national, and even international policies. Indira believes of politics was intertwined, that the worth of the human being as a foundation of our democracy. It is my extreme privilege in mentioning that she was not just an eloquent speaker, but she exercised her ideology and laid out her ideology, as we have seen during her term as the Prime Minister of India. Indira Gandhi says, a nation's strength ultimately consists on what it can do on its own and not what it can borrow from others. And even as you from India gather here together, we can do so much if we can join hands with empathy, sacrifice, and bring forward our innovations and service for greater India. Indira milestones for greater India are her famous slogan, Garibi Hatao, Desh Bachao, eradicate poverty and rescue the country, which was a predominant step in eradicating poverty, henceforth a turning point in the country's development. The nationalizations of banks and industries has significantly helped in reaching people from all segments in agriculture and small-scale industries. She had also helped abolish the private purses and brought about the social reforms and pitch for equality. Indira Gandhi was also one of the key facilitators of the Green Revolution, which had enabled India to strive for self-sufficiency. Indira also played a huge role in the liberation of Bangladesh. Indira was a leader ahead of her time, as it was during her term as the Prime Minister that the first Indian man was sent to the space. Her diplomacy, conviction, and her ardent love for the country was enormous, at the same time applaudable. Indira Gandhi have left behind a remarkable legacy for us to be bold and brave, to be selfless, and to carry a tale of patriotism. My words shall always fall short in paying tribute to her. So I'll end my homage with her famous lines, people tend to forget their duties but remember their rights. People tend to forget their duties but remember their rights. And my dear brothers and sisters, as I stand here in the parliament
and pay my tribute to Indira Gandhi. I want to urge all of us that as we celebrate her accomplishments and contributions, let us remember our duties as much as we remember our rights. I repeat, let us remember our duties as much as we remember our rights. Lastly, I would like to extend my heartfelt gratitude to the NYKs and Honorable Speaker and Pride for giving us this wonderful opportunity. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. थैंक यू फामिलिन। और आइए अब सुनते हैं ओडिशा की प्रतिभागी दिव्यांशी दास को, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हैं। Daughters are the living selfless trees on earth, and Indira Gandhi is that kind of a daughter. Namaste and a hearty greetings to all. I, Divyanshi Das from Cuttack, Odisha, feel highly privileged to get this golden opportunity to share my thoughts about the daughter of India, Srimati Indira Gandhi, the legendary woman leader of our nation. 19th November is a red letter day for all Indians, because on this day, a woman with magnificent personality, effective leadership quality and outstanding skills was born. She was awarded with highest civilian award, Bharat Ratna, in 1971. Indira Gandhi, the pathfinder, the path-setter and the lighthouse for every woman, empowering them with social, moral, spiritual and emotional quality, being the first and only the woman Prime Minister of India till date. Her achievements are countless in exhibiting the value of our motherland in the map of the world. Starting from centralization of power, facilitating the Green Revolution, nationalization of 14 private sector banks, Indo-Pakistan War of 1971 and liberation of Bangladesh. The Simla Agreement, the Operation Blue Star, the Operation of Smiling Buddha and wonderful foreign policy made her the Iron Lady of India. Her dedication for the nation can be felt from the fact that she was the Prime Minister of India for long 17 years. And what more one can give as tribute to this Iron Lady of Hindustan by observing and celebrating her birthday as National Integration Day, which really means we are just not equal by caste, creed, color and religion, but by humanity. Her love for the nation still echoes in the air with her words. Even if I died in the service of the nation, I would be proud of it. Every drop of my blood will contribute to the growth of this nation and to make it strong and dynamic. When I say these words of Srimati Indira Gandhi, even my spirit gets goosebumps, empowering me to follow her footsteps, to be like her and always a daughter of India, and serve for the nation selflessly. Thank you everybody. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू दिव्यांशी। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अब विचार अभिव्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सौरभ सारंगी को। मैं उस भारत की संतान हूँ जो अखंड सनातन साम्राज्ञी है, वीरता की वसुंधरा, शांति का शंखनाद और मानवता का अंतिम सहारा है। संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जलकर भी प्रेममयी गंगा की शीतल धारा है। मैं उस भारत की संतान हूँ जो अग्नि सा शौर्य, धरती सा धैर्यवान, फिर भी भूमि सा बलवान है। मैं उस भारत की संतान हूँ जो युग युग में सकल विश्व की मार्गदर्शक महाशक्ति महिमहान है। प्रणाम। उत्कृष्ट कलाओं की भूमि संबलपुर ओडिशा से मैं सौरभ षडंगी, एनएसएस वॉलंटियर, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में विराजित सभी महानुभावों का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरी मातृभूमि भारत मानव सभ्यता के 10 सहस्राब्दियों के लगभग सभी कालखंड में विश्व भर की मार्गदर्शक महाशक्ति रही। इसी शक्तिपुंज में आनंद भवन प्रयागराज में जन्मी दुर्गामती आयरन लेडी पुकारी गईं,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, तदुपरांत देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनके दीर्घ कार्यकाल में पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 में भारत की ऐतिहासिक विजय, सफल न्यूक्लियर टेस्टिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, 14 बैंकों एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण उनके कुछ सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है, जो उन्हें समग्र विश्व के सबसे शक्ति संपन्न महिलाओं की सूची में शामिल करते हैं। पश्चिम ओडिशा का एक प्रसंग आता है जब 26 जनवरी की पैरेड के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोक नर्तकी डालखाई नृत्यांगना श्रीमती गुरुबारी मिर्धा के साथ लोक नर्तन कर उस लोक कलाकार को सम्मान नवाजा था। भारतीय पारंपरिक वेशभूषा व संबलपुरी साड़ियों में सुशोभित हमारी इंदिरा गांधी जी इस देश की दुर्गामती तो हैं ही, साथ ही इंदिरा का एक और अर्थ निकलता है लक्ष्मी। श्रीमती इंदिरा जी इस भूमि की लक्ष्मी, दुर्गामती व आयरन लेडी हर रूप में सार्थक करती हैं। मेरी माँ से मैंने जो सीखा कि माता और मातृभूमि का कभी धन्यवाद नहीं किया जाता, क्योंकि धन्यवाद माता के लिए बहुत छोटा शब्द है। मातृभूमि को सदा पूर्ण कृतज्ञता और निष्ठा के साथ वंदन किया जाता है, अपने आप को अर्पण किया जाता है। कुछ ऐसी ही जीवन शैली रही इंदिरा गांधी जी की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प निष्ठा से समग्र विश्व को भारतीय नारियों के शक्ति का प्रदर्शन दिया और एक उत्कृष्ट महानुभाव के रूप में आज भी हम सभी के बीच प्रेरणा का स्तोत्र हैं। इन महानुभाव को मेरा शत शत नमन एवं मैं पुष्प श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। विश्व को भारत की अभूतपूर्व उपस्थिति का तब एहसास हुआ जब देश के लिए कई अहम और कठोर फैसले लिए गए। अब अपने विचारों के साथ हम मंच पर बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश के ऋतिकेश पूर्णोदय को। वो पर्वत राजा की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना सब धर्मों के देवालय से। भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया, अपनों के हाथों चली गई। नमस्कार, मैं ऋतिकेश पूर्णोदय उपस्थित हूँ हजारों संस्कृतियों के आलिंगन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश से स्मृति शेष इंदिरा गांधी जी पर अपने विचारों को लेकर के। भारतीय गौरवशाली इतिहास का सबसे चमकीला पहलू है यहाँ समय समय पर पैदा हुए महान व्यक्ति, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों का प्रकाश हम तक उसी प्रकार आ रहा है जैसे आकाश से नक्षत्रों का प्रकाश धरती तक आता है। वैदिक ऋषियों से चली आ रही महानता की इस परंपरा में सबसे ताजा नाम है इंदिरा गांधी जी का। 19 नवंबर 1917 को आनंद भवन में पहली बार आंख खोलने से लेकर 31 अक्टूबर 1984 को विश्वासघाती अंगरक्षकों की गोलियों से देह त्याग करने तक इंदिरा गांधी जी का जीवन अपने आप में महाकाव्य से कम नहीं। इनमें मौजूद हैं मानवीय जीवन के विविधता से भरे सारे पक्ष, मौजूद हैं भारत की उस बेटी की कहानी जो गूंगी गुड़िया से इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा तक बन गई। मौजूद है भारत के कटीले तारों से निकल के विश्व पर अमिट छाप छोड़ने की कहानी, चाहे वह आर्थिक और सामाजिक कल्याण को समर्पित बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर श्वेत और हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्य और दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना हो। महोदय, ये इंदिरा गांधी जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम था कि विश्व की महाशक्तियों के भारी विरोध के बावजूद वह दिन भी आया जब 17 दिसंबर 1971 को भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल एक साथ बदलकर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ, जो सदा सदा के लिए भारत गौरवशाली इतिहास के स्वर्णमयी पृष्ठों में दर्ज हो गया। महोदय, 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु विस्फोट न सिर्फ कहानी है भारत के परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की, बल्कि उदाहरण है इंदिरा गांधी जी के सुरक्षा और शांति के बीच अद्भुत समन्वय की। उन्होंने अपने अंतिम जनसभा में कहा था कि मेरे रक्त का एक एक बूंद देश को मजबूत करेगा। आज आवश्यकता है कि उनके देश प्रथम की इस भावना को फलीभूत करके हम युवा प्रण लें कि भारत को
पुनः उस स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे जिसका सपना इंदिरा गांधी जी ने देखा था। और इसकी कल्पना हम यहां बैठे सभी युवा से ही कर सकते हैं, क्योंकि युवा होना जिंदगी में जवानी का दौर मात्र नहीं जिसे आंकड़ों में शामिल करके गर्व किया जाए। शायद इसी रूपरेखा पर चल करके हम उन महान व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। मशहूर शायर कैफी आजमी ने एक बार कहा था कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए वैसे भी जाता नहीं कोई। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिकेश। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में चुनकर आई अगली प्रतिभागी आरती शर्मा को अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अपने विचार रखेंगी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी इस जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी इस जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में तो जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में तो जहान होता है। नमस्कार, मैं आरती शर्मा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिला बिलासपुर, देवभूमि, हिमाचल प्रदेश से। मित्रों, मैं वीरांगनाओं की इस कर्म भूमि पर जन्मी एक ऐसी वीरांगना के विषय में अपना शब्द पांडित्य लेकर उपस्थित हुई हूँ जिन्हें लौह महिला माना जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा जी न केवल भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, अपितु विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी उन्होंने अपना विलक्षण प्रभाव छोड़ा है। कि जख्म सीकर बताओ तो मैं मानूं, अश्क पीकर बताओ तो मैं मानूं। ऐ वतन वासियों, जख्म सीकर बताओ तो मैं मानूं, अश्क पीकर बताओ तो मैं मानूं। जरा सी हार पर मरने लगे हो, इंदिरा जी की तरह जीकर बताओ तो मैं मानूं, जीकर बताओ तो मैं मानूं। उनका मानना था कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और फिर भी आप दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति व सच्चा राष्ट्र प्रेम हमें सिखाता है। अंत में वैचारिक पटाक्षेप से पूर्व उन्हीं के भाषण की चंद पंक्तियां दोहराना चाहूंगी कि मुझे चिंता नहीं है मैं जीवित रहूं या ना रहूं, किंतु जब तक इस सांस में सांस है तब तक देश की सेवा करती रहूंगी और पूरे विश्व में भारत की एकता का डंका बजाती रहूंगी, भारत की एकता का डंका बजाती रहूंगी। मित्रों, मैं, आप, हम सभी इस देश की युवा शक्ति है। हमें स्वैच्छिक मान मूल्यों में जिन्न जिन्न पैदममय अखंड भारत को खंड खंड नहीं होने देना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकरें अक्सर पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। द लैंड ऑफ लीजेंड्स कहलाने वाले राज्य गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रही प्रतिभागी रामानुज हिरल को अब हम बुला रहे हैं, जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस केंद्रीय कक्ष में करेंगी। जिनके व्यक्तित्व और अहिंसा के हिसाब से देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह पूज्य महात्मा गांधी जी एवं अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि गुजरात के सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की छात्रा रामानुज हिरल का आप सभी को सादर प्रणाम। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, वो झांसी वाली रानी थी किसी से डर नहीं सकती।
मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, वह झांसी वाली रानी थी, किसी से डर नहीं सकती। इंदिरा गांधी हो, सानिया हो या हो मेरी कौम, इस दुनिया में असंभव क्या है जो एक नारी कर नहीं सकती। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न सम्मानित श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई बल्कि वैश्विक राजनीति के स्तर पर भी वह विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। आज यही वजह है कि उन्हें आयन बहिना के नाम से संबोधित किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 में नेहरू खानदान में हुआ था। वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। सिर्फ यही कारण नहीं है कि उन्हें जाना जाता है, बल्कि वह अपनी प्रतिमा और राजनीतिक दृढ़ता के हिसाब से विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेगी। उनके राजनीति के कार्यकाल में उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि आपातकाल जैसी परिस्थिति में भी उन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से खरी उतरी। जब बिजली गरजती है तो आसमान बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। वह पूर्व पाकिस्तान के साथ युद्ध के समर्थन में एवं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की जीत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साथ ही भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वह दक्षिण की एकमात्र क्षेत्रीय शक्ति बन गया। 1984 की वो बात जब हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा जी, उनके साथ बातचीत के दौरान पूछा गया एक प्रश्न आज भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है कि वहाँ से हिंदुस्तान कैसा दिख रहा है, और शर्मा जी का जवाब था सारे जहाँ से अच्छा। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ आज भी नारी के लिए प्रेरणा श्रीमती इंदिरा गांधी को माना जाता है। आओ मिलकर ऐलान करें हमारे देश भारत की और एक ऊंची उड़ान भरे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। भारत का युवा आत्मविश्वासी है और प्रतिगामी भी। तो आइए अब सुने संजीव मजूमदार को, जो हिंदी भाषा में अपने विचार मंच से साझा करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सशक्त महिला कौन है, तो आप में से बहुत सारे लोग इसमें एक प्रबंध लिख सकते हैं कि दृढ़ होना, निडर होना, इनमें प्रमुख कुछ गुण हैं। पर मैं सिर्फ 3 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। नमस्कार। माता त्रिपुरा सुंदरी के पुण्य भूमि से संजीव मजूमदार इस सभा सदन में उपस्थित सभी को अपना विनम्र नमन करता है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं लोकसभा अध्यक्ष साथ ही प्राइड को ये मंच हमें देने के लिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि इस विश्व राजनीति में अपना स्वर्णिम छाप छोड़ गई। आज इंदिरा गांधी जी को इस कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, बल्कि इनकी अपनी प्रतिभा और राजनैतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति में समय के अंत तक जानी जाती रहेंगी। 1917 सन को आज ही के दिन जन्मी इस छोटे बच्ची इंदु भविष्य में रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रियदर्शनी बनी। भारत की तृतीय तथा प्रथम एवं आज तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बहुत छोटे उम्र से ही अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर चुकी थी। अपनी 5 साल की उम्र में अपनी बहुत ही पसंदीदा विदेशी गुड़िया जला दी थी। अपनी 11 साल की उम्र में बच्चों की वानर सेना बनाई थी, जो शायद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे कम आयु का कोई संगठन है। पहले भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं उसके बाद भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में भारत को सेवा किया। ना सिर्फ राजनैतिक दृढ़ता बल्कि निडर प्रशासनिक सिद्धांत लेने की वजह से वो आयरन लेडी भी जानी जाती है। उनकी कर्म जीवन पर असंख्य सफलता जैसे कि हरित क्रांति, आर्थिक दृढ़ फैसले, बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे विश्व को भारत की शक्ति से परिचय करवाना, गरीबी हटाने का संकल्प, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जैसी बहुत कार्यदर्श है। साथ ही साथ इमरजेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी विवादित विषय भी शामिल है। इंदिरा गांधी जी एक ऐसी व्यक्तित्व है जिन्होंने अपनी ऐसी विरासत होने के बावजूद उन्होंने भारतीय न्याय व्यवस्था की सिद्धांत को मन से स्वीकार करके 1977 को जेल भी गए थे। परंतु सबसे दुखद बात यह है कि जिनके ऊपर उनकी प्राणों की रक्षा का दायित्व दिया गया था, उनके हाथों ही 1984 को उनकी देहांत हुई। परंतु फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की दुर्गा 1999 को BBC न्यूज़ आयोजित एक समीक्षा में इंग्लैंड की रानी प्रथम एलिजाबेथ, नोबेल विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी, नोबेल शांति पुरस्कार भूषित मदर टेरेसा प्रमुखों को पीछे छोड़कर इस 1000 वर्ष की सबसे महान नारी बनी। अनंत तक चलने वाले इस विषय को मैं आज के लिए मैं यह कह के अंत करना चाहता हूं कि इंदिरा की प्राण ज्योति न बुझी न बूझेगी कभी। इंदिरा की प्राण ज्योति न बुझी न बूझेगी कभी, वो तो लाखों प्राण ज्योति बनकर जल रही। कायरों ने सोचा था नामो निशान मिटा देंगे, कायरों ने सोचा था नामो निशान मिटा देंगे, पर वो तो भारती के नाम से ही जुड़ गई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। युवा प्रतिभाओं को मंच देना और नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी कड़ी में अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अमनदीप सिंह को, जो धरती के स्वर्ग कहलाने वाले जम्मू कश्मीर से हैं। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदा रहा है दुश्मन दोरेज़ा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह, NSS वॉलंटियर, GDC उधमपुर, जम्मू कश्मीर से आज आपके सामने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ज़िंदगी और उनके देश के लिए क्या बलिदान रहा और देश के विकास के लिए क्या योगदान रहा, इस पे अपने विचार रखने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। अगर आज मैं उनके देश के लिए बलिदान और देश के लिए योगदान पर बात करना शुरू कर दूं तो मेरे लिए 3 मिनट क्या, मेरे लिए 3 दिन भी कम होंगे। अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। आज हम अपने भारत देश को न्यूक्लियर पावर देश कहते हैं। क्या आप जानते हैं इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है? हमारे देश के साइंटिस्ट और आर्मी के साथ मिलकर स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन सफल किया, जिसमें हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ। जब हमारे देश में भुखमरी थी, किसानी हालत कमज़ोर हो चुकी थी, तब इंदिरा गांधी जी ने हरी क्रांति को बढ़ावा दिया, दी ग्रीन रेवोल्यूशन। हमारे देश से भुखमरी कम की और किसानी ताकत फिर से जिंदा की। जब हमारे देश में गरीब क्या, मिडिल क्लास आदमी भी परेशान था, तब इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का सरकारीकरण किया और मिडिल क्लास आदमी को लोन का सहारा दिया, जो आज भी एक बहुत बड़ा सहारा है। राकेश शर्मा जी फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू गो इन स्पेस, वो उनके समय में गए थे। आज इंदिरा गांधी जी ने अपना बेटा भी खोया, संजय गांधी जी, पर इंदिरा गांधी फिर भी कमज़ोर ना पड़ी, फिर भी उन्होंने देश की सेवा करते रही। लाइब्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नेशन। अरे एक नया देश ही बना डाला, दुश्मन देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। इससे बड़ा योगदान बताओ मुझे क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, क्या हो सकता है?
आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मुझे जो मौका मिला है। आज मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। आज हम अपने देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा बनाओ, क्योंकि जिस दिन हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी बेटियां होंगी तो हमारा देश इतना ताकतवर होगा कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अंत में मैं यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद अमनदीप। अब आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से हैं और राजधानी दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी माननीय सभाजनों को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रेया श्रीवास्तव 12वीं कक्षा बाल भारती पब्लिक स्कूल द्वारका नई दिल्ली की छात्रा हूँ। 19 नवंबर 1917 को भारत के इलाहाबाद में एक ऐसी महान हस्ती का जन्म हुआ जिसने राजनीति में न सिर्फ नई मिसालें कायम की, अपितु पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र के साथ अपने व्यक्तित्व का भी लोहा मनवाया। श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी जी लोकतांत्रिक समाजवाद तथा मानवीय भावना की प्रतिभाशाली शक्ति एवं ओजस्विता का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनके शासनकाल में महिलाओं को बराबरी का हक मिला। खेती हर महिला मजदूरों को पुरुषों के बराबर मजदूरी देने का कानून भी बनाया गया। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। किसानों के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया, जिससे देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। उनके कार्यकाल में बैंकों एवं तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। उनकी दूरदृष्टि, चिंतन, दक्षता, त्वरित निर्णय क्षमता जैसी नैसर्गिक गुणों के कारण इंदिरा गांधी जी ने प्रियदर्शनी से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। उनकी कार्यशैली ने उनके व्यक्तित्व को एक ऐसा अद्भुत रूप दे दिया था कि वे कालांतर में देश दुनिया की लोकप्रिय जननेता बन गई। इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण कर पूरे विश्व को यह आभास करा दिया कि भारत विज्ञान और तकनीक के मामले में दुनिया में किसी से कम नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष और रंग भेद आंदोलन तथा भूमंडल की शांति आंदोलन में बेजोड़ निपुणता तथा महान गरिमा के साथ अपनी महती भूमिका निभाई। यदि अभी समय सीमा की बाधा न होती तो उनके इन अभूतपूर्व योगदानों की गाथा कभी समाप्त न होती। अतः मैं इन दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहकर दुनिया ने जिसे पुकारा था, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहकर दुनिया ने जिसे पुकारा था, जिसे अटल बिहारी जी ने तब दुर्गा बोल सराहा था, जिनके सानिध्य से आई एक राजनीतिक आंधी थी, ऐसा अन्यत्र कोई और नहीं। जी हाँ, वह तो इंदिरा गांधी थी, वह तो इंदिरा गांधी थी, वह तो इंदिरा गांधी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी युवाओं का ऊर्जावान, तेजस्वी और विश्व को भारत की अभूतपूर्व उपस्थिति का एहसास कराने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जीवन पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जनों का भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों से हमारा आग्रह है कि ग्रुप के अनुसार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और युवा कार्यक्रम विभाग के प्रतिभागी भोजन के लिए पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग की ओर प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित रहे एयरफोर्स स्कूल नई दिल्ली और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए विद्यार्थी स्मृति चिन्ह लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे।